Hmm. Hello, Apurva. Good evening, sir. Sir, Eve- uh, Mhm. I have I have infection in my right eye, so I want my camera off. No problems, no problems. Please don't worry about it. I'm glad that you are at least in the class. Okay. Hey, Good evening. Atif. Hello, Good sir. evening. Evening, Atif. Hello, sir. Abhishek is sitting in the dark. Abhishek. Sir, you didn't share the studies class recording? I'm sorry about that. Good There evening, was sir. there was some problem. You see, my computer ran out of space, and I had to clear space first of all, make some space for the conversion of the file, and I couldn't do it yesterday. So I'm doing it now. Maybe I'll share the recording, yesterday's recording, today. Okay. Yes, sir. It's okay for me because I didn't use my laptop and phone because of my eye, the infection in my eye. So, Mm. but I see the message. I saw the message in the group Yeah, when quite I a few joined the people class. were asking for the recording. I'm sorry about it. Hopefully today I will share the Good evening, recording. sir. Hey Abhishek, good evening. So did you listen to the grandfather grandson conversation? Yeah. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Okay. So we are going to listen and understand. Today I'm not attending the class because yes, Anish, you can turn off your camera. As ma'am is not well. And now we are going to start listening to this conversation. It's a fun conversation. We are going to learn a lot of things. Yeah. Where and when was the Beatles concert? The Beatles concert. When and where was the Beatles concert? The Beatles concert was on August 1965. It was in August. Uh-huh. Interesting. The Beatle concert was held in August 1965. It was in August 1965. And where was it? Sia It Stadium, New York was City, at sir. this Say Was It at Stadium. was It at Sia a Stadium, stadium. New It York was at City. a stadium. was at It was Stadium. at a stadium, right? Mm. Good evening, sir. Good evening, Anshu. Where and when? Where and when did you meet your husband? Right. Where and when did you meet your husband? Where and when did you meet your wife? Where and when did you get to know about my class? Okay. Where and Hmm. when? Did Terry enjoy it? Yes, he did. Okay. It refers to what? The concert. The concert. Concert, The sir. concert, right, everyone? The concert. Yes. Yes, sir.
It refers to the concert. Did Terry enjoy it? Yes. After enjoy, we always use an object. Did Terry enjoy the concert? And instead of repeating the word concert, we simply said, Did Terry enjoy it? I mean, we can, if we want, we can replace it. Okay? We can remove it. And if we want, we can say, Did Terry enjoy the concert? Did Terry enjoy the concert? Right, everyone? Yes, sir. Where and when was the Beatles concert? Did Terry enjoy the concert? Did Terry enjoy it? Hmm. Next. How many people were in the audience? One more thing. Wait. Before you answer question number three, I would like to talk about question number two. When I said, Did Terry enjoy it? Apurva said, Yes, he did. And she became quiet after that. Why? Why did she go quiet after, Yes, he did? Apurva, why did you go quiet after saying, Yes, he did? Why didn't you say something more that you heard in the audio? You thought it was unnecessary? You thought you answered the question? Or you didn't remember anything more? What was the reason that you said only, Yes, he did, and then you went quiet? Sir, earlier when you taught us, you said that it is not necessary to tell everything when you say like yes he did, and we did the practice of these type of statement, na sir. So I You told. misunderstood. You misunderstood what I said. Let me explain again, okay? Okay, sir. So, yes, it is true that you need to just say, Yes, he did to say yes. But after saying yes, can't you add more information in another sentence? When I said don't add anything, I said don't add anything to that sentence. But I didn't say don't add any information. How can a teacher say don't add No, information? no, sir. You said about the word in the sentence. So don't use that word, that repeated Yes, word in. I understand. And I agree that I said that. And I'm glad that you also replied with only yes, he did. But after yes, he did, is there not more to say? Suppose I went to a party last night and you asked me, Sir, did you enjoy the party, sir? And I said, Yes, I did. And I become quiet. Then what will be the message for you? Then I will not. I will not understand what thing you enjoyed. You will You enjoyed will get a there, message, like. perhaps from my, if I did not sound very polite, if I didn't sound very friendly, you might think that sir doesn't want to talk about it. Okay, sir. We only understand he enjoyed there, but he didn't want to share which types of things he liked there, or that feels him that he feels he felt happy there. Right, what made him happy? Okay. Okay. Remember, Apurva, don't use the verb enjoy without an object. That's my point. I'm saying it, and you said you repeated. Just if you watch the recording later, you will realize that you use the word enjoy without an object. Again, enjoy Enjoy, enjoy enjoy. के बाद ऑब्जेक्ट जरूरी है. एवरीबॉडी, क्या होता है इसका मतलब? अरे कल बर्थडे पार्टी था, हम बहुत एंजॉय किए. हिंदी में सही है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, इंग्लिश में इस बात को बोलो. यस्टरडे देयर वाज आई वेंट टू अ बर्थडे पार्टी. मैं And I बहुत enjoyed बहुत a lot there. रॉन्ग Enjoyed. सेंटेंस. रॉन्ग सेंटेंस, दैट्स माय पॉइंट. I एवरी, I was enjoy there. ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ. इंजॉय वर्ब है, तो इंजॉय का वी टू यूज करेंगे. वॉज और वी वन तो कभी नहीं बोलते अपूर्वा. I ये कैसे? enjoyed it.
नहीं बेटा, Abhishek, you're wrong. Yes, I enjoy it. Yeah, I enjoyed it. I the enjoyed the party. party. I Enjoy enjoyed the party. I myself. had enjoyed Enjoy party. myself. ठीक है, लेकिन I enjoyed a lot नहीं बोल सकते. I enjoyed the party a lot. I enjoyed myself a lot. I enjoyed it a lot. कुछ तो बोलना होगा. मैंने कहा कि कल हम एक बर्थडे पार्टी में गए थे, बड़ा मजा आया, बहुत इंजॉय किए. हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है. ये बहुत कॉमन, और सारे एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछते रहते हैं ये. इंजॉय वर्ब के साथ ऐसा करके दे देंगे, आई इंजॉयड अ लॉट. गलत है. क्या बोलना पड़ेगा? I I enjoyed enjoy enjoy it a lot. Enjoy a it lot. to a I lot. enjoyed a lot the birthday आई party. आई एंजॉय, no, रेनू, आई एंजॉयड द बर्थडे पार्टी अ लॉट. पहले पहले I ऑब्जेक्ट. enjoyed the birthday party a I lot. enjoy the I birthday enjoyed the birthday I party. enjoy party a lot. हम्म. I think, sir, I did lots of time this mistake, sir. I think. Yeah, a lot of times, a lot of times. Yes, sir. I realized now when you Hmm. point out these things, I realized that I did these mistakes lots of time. I made this mistake, huh? I made I made this mistake. A lot of times. Yeah, it is true, Apurva. Okay, everybody, did Terry enjoy it? Yes. Yes. Yes, he did. Yes, he Yes, he did. did. और Yes, he उसके did. बाद कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, हम कुछ ऐड नहीं करना चाहेंगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस में, नया Yes, he सेंटेंस. did a lot. He enjoyed the party a lot. और कुछ concert इन्फॉर्मेशन a नहीं lot. है हमारे पास. नहीं बोल पा रहे कोई. अच्छा, Enjoyed कोई नहीं. a lot. Oh my goodness, Kashif is injured badly, I think. Because it was his favorite band group's concert. Yeah, He something like enjoyed that, Renu. very Yes, well. Renu. Yes, Renu. Yes, something like that, Renu. He thought it was the best concert ever. He thought it was the. Best concert ever. He said that or not, Renu? It was the Yeah. best concert ever. Yes, sir. He said that. He said. So that's what I'm saying. When you He talk in said. English, sometimes you guys become under so much pressure that you stop thinking. It happens. You don't flow, you don't go comfortable. You're not like in the mood to talk. You like, I'm doing an exercise, right, wrong, pressure, and you forget to talk. Did Terry enjoy it? Oh yes, he did. ऐसे भाई बात कर सकते हैं अगर आप टीचर स्टूडेंट ना बन के बात करें तो. Oh yes, he did. He really enjoyed it. He enjoyed it a lot. ऐसे करके बात बढ़ा सकते हैं कि नहीं? बात समझ में आ रही है दोस्तों? जरा मेरे मूड को गौर करिए, मेरा टोन को गौर करिए. बाकी वर्ड्स पे ज्यादा मेरे टोन को गौर करिए. पूछिए मुझसे. Ask me the question. Did Terry enjoy it? Oh yes, he did. He enjoyed it a lot. He said it was the best concert ever. देखा मेरा टोन देखा. कुछ समझ में आया दोस्तों मैं किस बारे में बात कर रहा था? Good evening, ये sir. आपका एटीट्यूड. अरे ये कौन आया कि दिल में हुई हलचल? हाँ, हु इज दिस हियर? Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आरती. Yes, sir. Yeah, For a you have long changed a time. lot. Because You look very I happy. am at home. You're at home. Which home? Mother's sir. home or in-laws home? In-laws home. Okay. That's why you're happy. You're with your family, your husband's family, right? After a Yes, sir. long time, I think you're home. So,
Yes, sir. We all missed you. I think we did. Guys, did you miss Aarti? Yes, we did. We did. We did. We all did. Okay. So welcome, Aarti. And are you gonna be regular now, or you are here only for one day? No, sir. Regular. No. I am going to be regular, Aarti. Sir, हम regular रहेंगे. I am I'm going to be going to regular. be regular. हाँ, वो होता है शुरू शुरू में आदत ही बना दी है ना बचपन से एक वर्ड बोल के कि एक वर्ड बोल के इंग्लिश बोलना है. आपके मन में यही आता ना हिंदी में, नहीं सर रेगुलर रहेंगे सर, यही बोलते ना. यस सर, Yes, sir. यस सर, आई एम गोइंग टू बी रेगुलर सर, आई एम गोइंग टू बी रेगुलर. मैंने दिया भी था आपको ऑप्शन, आर यू गोइंग टू बी रेगुलर और यू आर हियर फॉर वन डे. तो आपने उसमें से एक वर्ड चुन लिया, रेगुलर. यही होता है, जब आप पूरा ध्यान लगाओगे तो पूरा सेंटेंस बोल पाओगे दोस्तों. ओके. लेट्स सी. हाउ मेनी पीपल वर इन द ऑडियंस? 22 peoples. There were There are thousands of 50,000 people. How audience. do I change the brightness? 50,000. there were over There 55,000 were Over the people 50,000 audience. I can understand, Ganpat, your network is bad because you are there. How do we change the brightness of the screen, guys? Anybody can help me? Because the screen looks rather bright. I too felt that. Since yesterday, I'm getting a headache because of this. Look, now it is not so bright suddenly. What do I do? How do I change the brightness? Here? Oh, yes. Picture mode. Okay, custom. Just a second, people. I'm trying to. Please be aware that change in the setting can increase energy consumption of this monitor. Okay. So what do I do? How do I? Okay. Give me a second, people. I'm trying to change the. Okay, maybe this. No, this will not work. No. Okay, I'll do it later because. How many people were in the audience, everyone? There there are were thousands people. Over People. 50,000 people there. There are Yes. 50,000 audience. There were more than over 55,000 people in the audience. There were over 55,000 people, right, guys? yes sir. And how many policemen were there? There were over over 2,000 police policemen there. Yeah, there were a lot of policemen there. There were over 2,000 policemen there. And what did the fans do when the Beatles appeared? The fan, they Mm, went crazy. the Beatles appeared. When They the They went Beatles crazy. appeared, They went they went wild. they went they wild. climbed they climbed over each other to get closer. Say it again. Say it again, Apurva. They Climbed each other. over each other to get closer. Climbed One more time, over each Apurva. other. Let Apurva speak. I want to hear the word she's saying because she's saying it in a very funny way. Apurva, say it again. Mm, they went crazy and they climbed over each other to get closer. They climbed over each other, right? Not climbed, okay? Climbed, okay? They climbed over each other, exactly. Sometimes it happens in a crowd. People try to climb over each other's shoulders. Yeah, okay, shut up. Okay. Now they will start asking me what is chaotic. Okay, what was the problem? What was the problem? The scream was so loud. The screaming was so So There was a loud. lot of noise. There was a lot of noise. There was a so lot you of could noise, and people could not hear the music. yes sir. The concert was so noisy, the audience were so noisy that nobody could hear the music. The people, the audience, made so much noise that nobody could hear the music.
करना क्या है, तुम्हें खूब सुनना है, सेंटेंस फॉर्म होने लगेंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट काम तो हम लोग स्कूल में भी किए बेटा, कॉपी पेस्ट तो स्कूल में भी किए है, जो लाइन सुने जस के तस चिपका दिए, उससे इंग्लिश बोलना नहीं आता, ओके। इंग्लिश बोलना तब आता है जब हम जो सुने उसकी जगह कुछ और बोले, लेकिन बात फिर भी सही रहे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ओह इट वाज वेरी नॉइजी देयर, पीपल कुड नॉट हियर द म्यूजिक, बस बात खत्म। लाइन ऐसे नहीं सुने होंगे, है ना, ये भी सही जवाब है कि नहीं। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, पीपल कुड नॉट हियर द म्यूजिक बिकॉज इट वॉज वेरी नॉइजी। हो गया, बात खत्म। बात समझ में आ रही है दोस्तों। Yes, sir. तो आपको चिपकाना नहीं है वो लाइन, समझना है, लेकिन जब जवाब दे रहे हो तो आप फ्रीडम रख सकते हैं, अपने तरफ से बोलिए, नो प्रॉब्लम्स, सिंपल सेंटेंसेस। हाउ लॉन्ग डिड दे प्ले, They played for only played for half an hour. they played only for 30 minutes, guys, they only played for half an hour, right? yes. And how many songs did they play? They played 12 songs. 12 They songs. played 12 songs. 12 songs. They played 12 songs. And अगर हम चाहे तो डिटेल दे सकते हैं, लेकिन but Terry did not listen to all the songs. He could not hear all the songs. He could not hear all the songs because of the noise, right? They played Yes. 12 songs, but Terry only heard a few songs, 2-3 songs. ऐसा अपने तरफ से बोल सकते हैं कि नहीं, कि गाना तो उन लोग 12 बजाए थे, लेकिन टेरी को 2 ही 3 सुनाई पड़ा बिकॉज इट वॉज टू नॉइजी। सही है ना। Yes, sir. I will be right back. You guys just practice. Maybe what do I'll play the audio and I'll be right back. Unit 7, Exercise 7, Parts 1 and 2. 1. Derek. My favourite film is Jaws. I saw it years ago and I was so frightened I couldn't watch. I closed my eyes. I liked it because I like sharks, I really do, and I enjoy frightening films. Also, I loved the Jaws music. Da-da, da-da. I feel frightened hearing it now. I'm not sure who starred in the film. I think it was Robert Shaw. 2. Mandy. I like a lot of films, but I think Pride and Prejudice is one of my favourites. I loved the actress Keira Knightley in it. She was excellent. And I really loved the beautiful clothes they wore. You see, I know the book very well, and I loved it when I saw it on TV. I thought the film would be rubbish, but I liked it even more than on TV. It's just so romantic. 3. Frank. I love Western films. I think it's because I played cowboys and Indians all the time when I was a boy. My favourite cowboy movie is High Noon with the fantastic Gary Cooper. I like it so much because it's a classic Western and I really love the ending. 4. Nora. Oh, Gone with the Wind. That's a lovely film. It's long, but the story's so interesting all the way through. I love it because I love Clark Gable. Vivian Leigh is beautiful too, but Clark is fantastic. I saw it for the 4th time last year. 5. Sam. We have all the Star Wars movies on DVD. I like them all, but my favourite is Star Wars 6, Return of the Jedi. The best thing about it is the battles and the love story between Han Solo and Princess Leia. I don't know all the stars in it, but I know Carrie Fisher was Princess Leia. She was great. 6. Helen. My mum's favourite film is Breakfast at Tiffany's. I didn't know it, but I watched it with her on DVD last weekend, and now it's my favourite movie too. Unit 7, Exercise 7,
Parts 1 and 2. 1. Derek. My favourite film is Jaws. I saw it years ago and I was so frightened I couldn't watch. I closed my eyes. I liked it because I like sharks, I really do, and I enjoy frightening films. Also, I loved the Jaws music. Da-da, da-da. I feel frightened hearing it now. I'm not sure who starred in the film. I think it was Robert Shaw. 2. Mandy. I like a lot of films, but I think Pride and Prejudice is one of my favourites. I loved the actress Keira Knightley in it. She was excellent. And I really loved the beautiful clothes they wore. You see, I know the book very well, and I loved it when I saw it on TV. I thought the film would be rubbish, but I liked it even more than on TV. It's just so romantic. 3. Frank. I love Western films. I think it's because I played cowboys and Indians all the time when I was a boy. My favourite cowboy movie is High Noon with the fantastic Gary Cooper. I like it so much because it's a classic Western and I really love the ending. 4. Nora. Oh, Gone with the Wind. That's a lovely film. It's long, but the story's so interesting all the way through. I love it because I love Clark Gable. Vivian Leigh is beautiful too, but Clark is fantastic. I saw it for the 4th time last year. 5. Sam. We have all the Star Wars movies on DVD. I like them all, but my favourite is Star Wars 6, Return of the Jedi. The best thing about it is the battles and the love story between Han Solo and Princess Leia. I don't know all the stars in it, but I know Carrie Fisher was Princess Leia. She was great. 6. Helen. My mum's favourite film is Breakfast at Tiffany's. I didn't know it, but I watched it with her on DVD last weekend, and now it's my favourite movie too. I think I liked it because it's in New York. We had a holiday there last year, and I thought it was a fantastic city. Also, I think Audrey Hepburn is so beautiful, and I love the ending in the rain. So romantic. Unit 7, Exercise 7, Parts 1 and 2. 1. Derek. My favourite film is Jaws. I saw it years ago and I was so frightened I couldn't watch. I closed my eyes. I liked it because I like sharks, I really do, and I enjoy frightening films. Also, I loved the Jaws music. Da-da, da-da. I feel frightened hearing it now. I'm not sure who starred in the film. I think it was Robert Shaw. 2. Mandy. I like a lot of films, but I think Pride and Prejudice is one of my favourites. I loved the actress Keira Knightley in it. She was excellent. And I really loved the beautiful clothes they wore. You see, I know the book very well, and I loved it when I saw it on TV. I thought the film would be rubbish, but I liked it even more than on TV. It's just so romantic. 3. Frank. I love Western films. I think it's because I played cowboys and Indians all the time when I was a boy. My favourite cowboy movie is High Noon with the fantastic Gary Cooper. I like it so much because it's a classic Western and I really love the ending. 4. Nora. Oh, Gone with the Wind. That's a lovely film. It's long, but the story's so interesting all the way through. I love it because I love Clark Gable. Vivian Leigh is beautiful too, but Clark is fantastic. I saw it for the 4th time last year. 5. Sam. We have all the Star Wars movies on DVD. I like them all, but my favourite is Star Wars 6, Return of the Jedi.
The best thing about it is the battles and the love story between Han Solo and Princess Leia. I don't know all the stars in it, but I know Carrie Fisher was Princess Leia. She was great. 6. Helen. My mum's favourite film is Breakfast at Tiffany's. I didn't know it, but I watched it with her on DVD last weekend, and now it's my favourite movie too. I think I liked it because it's in New York. We had a holiday there last year, and I thought it was a fantastic city. Also, I think Audrey Hepburn is so beautiful, and I love the ending in the rain. So romantic. Unit 7, Exercise 7, Parts 1 and 2. 1. Derek. My favourite film is Jaws. I saw it years ago and I was so frightened I couldn't watch. I closed my eyes. I liked it because I like sharks, I really do, and I enjoy frightening films. Also, I loved the Jaws music. Da-da, da-da. I feel frightened hearing it now. I'm not sure who starred in the film. I think it was Robert Shaw. 2. Mandy. I like a lot of films, but I think Pride and Prejudice is one of my favourites. I loved the actress Keira Knightley in it. She was excellent. And I really loved the beautiful clothes they wore. You see, I know the book very well, and I loved it when I saw it on TV. I thought the film would be rubbish, but I liked it even more than on TV. It's just so romantic. 3. Frank. I love Western films. I think it's because I played cowboys and Indians all the time when I was a boy. My favourite cowboy movie is High Noon with the fantastic Gary Cooper. I like it so much because it's a classic Western and I really love the ending. 4. Nora. Oh, Gone with the Wind. That's a lovely film. It's long, but the story's so interesting all the way through. I love it because I love Clark Gable. Vivian Leigh is beautiful too, but Clark is fantastic. I saw it for the 4th time last year. 5. Sam. We have all the Star Wars movies on DVD. I like them all, but my favourite is Star Wars 6, Return of the Jedi. The best thing about it is the battles and the love story between Han Solo and Princess Leia. I don't know all the stars in it, but I know Carrie Fisher was Princess Leia. Sorry, I played the wrong audio file. So wrong. I'm so wrong, guys. And I think I'm and sorry. I think it is on. I actually got a little bit occupied with something, here. And sorry, I didn't even play the right file. Sorry about it. Oh, come on. Okay. Okay, how many policemen were there? I'm so sorry. Your time was wasted while I was not here. I thought you guys would at least listen. What were you doing? Huh? You know how to use a computer, or you just don't know how to use a computer? This is a practice book here. And you silly boy. Responsibility, leadership, what is that? See? Unit 6, Exercise 6, You are not paying Parts 1 and 2. Grandfather, did you ever go to a pop concert? This was the audio file that we were supposed to listen to. Okay, guys. Okay, 10 minutes wasted. Not a big deal. Let's talk about it, what we are doing now. Okay. So you guys all patiently listen, huh? Okay, fine. But I can't, sir. What can we do now, sir? What can we do? Yeah, it was not in your control. It was not in your control. You Yes. should have talked to the guy here. You should have said, "Where is sir? This is the wrong audio file." Somebody sitting next to me. You could see him a little bit. You could have asked him, "Hey, where is sir? It is not the right audio file." You could have said that, right? Do you agree? Yes, sir. Where did sir go? It is not the right audio file.
then he could have done something because he was absent yesterday. He didn't know which audio file. But it was in the group too. तुम सब लोग ना थोड़ा सा एहसास करो कि इंग्लिश में कैसे तुम अपना कॉमन सेंस खो देते हो, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब गड़बड़ हो जाता है इंग्लिश के साथ। क्या मानते हो कि आप अपने नर्वसनेस में बहुत कुछ नॉर्मल नहीं कर पाते दोस्तों? जैसे ये अभी जो हुआ, आप में से किसी ने नहीं बोला कि इट इज द रॉन्ग ऑडियो फाइल? किसने बोला जोर से आवाज निकाल के, इट इज द रॉन्ग ऑडियो फाइल? किसी ने बोला नहीं? क्यों नहीं बोला? But we thought, sir, you playing it. I am confused, sir. Here is a I don't know, Terry. sir. And the audio studio कंफ्यूज क्या said होता है? Terry. कंफ्यूज क्या होता है? जब बात हुई थी कि ये ऑडियो फाइल प्ले, सुनिए मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, तो कोई और ऑडियो फाइल प्ले हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज क्या होना है? ये बोलना है कि गलत ऑडियो फाइल है। क्या कंफ्यूज थे कि अरे शादी का गाना कैसे बजा दिए सर? वो स्टार्ट कर रहा टेरी सर, यहाँ पर 2 पॉइंट में टेरी स्टार्ट हो 2 पॉइंट क्या आते? मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इस बात को सब लोगों के लिए कि क्या आप नॉर्मल जो इंसान हैं, पढ़े लिखे समझदार जो हैं जिस उम्र में, आप वो अचानक से इंग्लिश में घबरा करके आप बच्चे हो जाते हैं और आप वो नहीं करते जो आपको नॉर्मली करना चाहिए, जो आपका दिमाग कहता है। अगर वही चीज इंग्लिश में की जगह हिंदी में हो रही होती तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये सच है? क्या ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए कोई कोर्स करना पड़ेगा या स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली? स्ट्रांग होना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है दोस्तों, ठीक है? आई एम स्पेशली एक्सपेक्टिंग अंशु, अभिषेक, अपूर्वा, रेनू, Adib, Uzma, these people should have, Moni, you know, you guys should have objected. Nishat, Atif, you guys should have objected. This is not the right file. This is the wrong audio file. That's all. लेकिन ये नहीं हुआ। आप घबरा जाते हो इंग्लिश में, हाँ या ना? अपना अपना सब बताएंगे कि क्या क्या चल रहा था दिमाग में। उसको भाषा के रूप क्यों नहीं दिया, शब्दों का रूप क्यों I नहीं thought, दिया? sir, you already sent the audio file yesterday, and you want that we listen something new. That's why you played this file. I thought this, sir. I'm sorry, Renu, I was distracted. Can you say that again? Sir, I thought you just sent audio file yesterday, and you want that we want to listen some new file. That's why you played this. I Oh, thought this, sir. okay. You thought I wanted you guys Yes. to listen to a new audio file. Yes, Apurva, yes, sir. what went That's through your why. mind, Apurva? Sir, I am also think like that because the previous audio file. Apurva, सोच के बोलना इंग्लिश। पहला 2 वर्ड बहुत सोच के बोलना होता है। I am think like that. मुझे ये गलती मंजूर नहीं तुम्हारी। I think I that I am thinking like that, sir. I am कि thinking मतलब क्या होता है? हिंदी करो। मैंने बोला है तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना होगा पहले 2 वर्ड्स के लिए। आई एम थिंकिंग हिंदी करो। मैं सोच रही आई एम थिंकिंग मतलब मैं सोच रही थी। मैं सोच रही हूँ। I अच्छा, was thinking. sir. तो आई एम थिंकिंग ये सब तुमने बोला बिना सोचे हुए कि क्या इसका मतलब है? Am I right, Apurva? नहीं सर, I want to say कि मैं सोच रही थी, so the correct thing was I was thinking. तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ पूर्वा कि आपके पहले 2-3 वर्ड्स पे आप बहुत ज्यादा ध्यान लगाओ क्या बोल रहे हैं ना, बिना सोचे नहीं बोलने का है। टाइम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? क्या ये गलती अवॉइड करी जा सकती थी अपूर्वा? Yes, sir.
आपको मेरी हेल्प की जरूरत है इस गलती को अवॉइड करने में? No, sir. I Good, will do it good, by myself. good. Okay, Moni, what went through your mind? Why didn't you react? Why didn't you say anything? Why didn't you say anything, Moni? I thought that you want to learn a new audio Wanted to file. teach. You wanted to teach, not learn. You wanted to Wanted to teach. teach. You wanted to teach a new I audio see. file. Yeah, that I can understand. That can confuse. Okay, never mind. Never mind. Okay, how long did they play? They played for 30 minutes, for half an hour. How many songs did they play? They played 12 songs, but Terry only heard a few songs, not all the 12. Not all the 12. He did not hear all the 12 songs. Am I right, guys? He did not hear all the 12 songs. ये सेंटेंस फॉर्म करना हमें आना चाहिए कि नहीं वो 12 बजाया तो लो 12 गाना सारा पूरा नहीं लेकिन Terry. How much was Terry's ticket, guys? How much was Terry's ticket? How much was Terry's ticket? It It was was $0.75. $5.75, right? Yes, sir. $5.75. What was the first Beatles record Terry bought? What was the first Beatles record Terry bought? What was the first Beatles record Terry bought? It was I Want Hold Your Hands. I want to, Reddy. I want to hold your hands. Okay. When I come to Madhya Pradesh, then okay, fine. Okay, sorry, bad joke. I can't understand. I couldn't understand, sir. Sorry, sir. Okay, sir, I understand now. He said, I want to hold your hand. I said, okay, when I come to Madhya Pradesh. Okay. Listen again and complete the sentences. Number 1. Terry thought the concert was exciting, but also frightening. Terry thought the concert was exciting, but also Frightening. frightening. Terry thought the concert was exciting, ing adjective, but also frightening because he was frightened, right? Okay. The audience were very Noisy. The audience were very, come on guys, number 2, the audience were very noisy and excited. Excited, very good. The audience were very noisy and excited. Number 3, when the Beatles appeared, the crowd went Wild. Wild. The crowd went wild, crazy. The crowd went crazy, okay? Terry had one of the Best seats. one of the best seats, okay? He had one of the best seats, yeah? Joe thinks that the ticket was very Cheap. Expensive. okay. No. Joe thinks that the ticket was very cheap. Joe did not say it was expensive. He said very cheap. That's cheap. That's very cheap. I will play the audio now, okay? Listen everybody. Did I ever go to a pop concert? 6. Parts 1 and 2. Grandfather, did you ever go to a pop concert? Grandfather, did you ever go to a pop concert? Now, this sentence teaches you something. इससे आपको कुछ सीखने को मिल गया? मिला कि नहीं मिला? कैसे? मेरे से कुछ पूछ लो ऐसा ही. अगर सीखने को मिला तो दिमाग चला तो. Sir, did you ever go to a cinema? Very good, Moni. And my answer is of course. Any other question, anybody? Did you ever go to a museum? Yes, Renu. What good question, sir. Did you ever go to a museum? Yes, of course. Any other question anybody has? Did you ever go to Kashmir? No, not yet, Atif. No.
Okay, good question, Atif. Very nice. Next people, other people, ask me a question like this. अब आपके पास चार Sir, did you ever go to gym? Okay, go to the gym. अंशु, इससे बेहतर कुछ नहीं आया दिमाग में. एक बात होती है, अगर किसी का बर्थडे Did बर्थडे you होता है ना, सुनो मेरी बात. किसी का बर्थडे बर्थडे होता है ना, तो मन नहीं रहता है जाने का या कोई इससे करीब नहीं रहता, तो एक तो छोटा सा 100 पेन ऐसे डब्बा में खरीद के ले जाके दे देते हैं उसको. ठीक है दोस्तों. और जो करीबी रहता है ना, तो कुछ स्पेशल करना चाहते हैं. ये पेन वाला गिफ्ट दी हमको. ठीक है अंशु. डिड यू एवर गो टू द जिम? कुछ सोचा वोचा नहीं, मन से कुछ मन नहीं था पूछने का, ऐसे ही नाम टिक करवाना था कि हम भी पूछ लिए, लो पूछ लिए. अंशु, ऐसे नहीं होगा. आपको इंटरेस्टेड होना होगा. ठीक है. अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो ऐसे ही होगा. ठीक है. बिहार में एक कहावत है ना अंशु, लग्गी से घास गड़ना. ये वो वाला एग्जाम्पल था. एकदम पक्का वही वाला एग्जाम्पल था दोस्तों. डिड यू एवर गो टू जिम ना. और पूछा जाए. कम ऑन गाइस, एनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? Sir, today I have headache, sir. I have a headache. You I have a have headache. a headache. Okay, Anshu. I understand you are looking a little tired as well and quiet type. I can see that. Your energy, body language is different today. I can understand. That's okay. Take some rest. No problems. Okay. I'm not judging you. I know you will think of a nice question later. Somebody else, please. did you ever go to music concert? Okay. A छोड़ दिया तुमने. Did you ever go to a music concert? Okay. Alright, guys. आपने गौर करा कि आप सब लोग गो पे अटक गए हैं. सारे एग्जाम्पल्स किस पे आए दोस्तों? Go. Did you ever watch Pro Kabaddi League? ठीक है. गौर करिए आप सब. इससे क्या पता चलता है कि आपका इमेजिनेशन जो है पूरा फ्री नहीं है अभी. उस सेंटेंस को उतना गहरे से नहीं समझे. आप बोले जा रहे हैं लेकिन दिमाग में वो गहरे नहीं जा रहा वो सेंटेंस आपके. अगर गहरा जाता तो आप इससे आगे बढ़ते. डिड यू गो एवर गो से आगे बढ़ते कि नहीं दोस्तों? पहले ये सोचिए. क्या मजाक था कि सारे के सारे गो से ही बोले? क्या सवाल और कुछ नहीं हो सकता गो के अलावे? Did you ever play hockey, sir? That's a nice question. Did you ever play hockey? Right? Good. No, I never did. No, I never did. Did you ever take a cappuccino? Drink. Did you ever drink or have? Okay? Okay. Did you ever have a cappuccino? Did you ever drink a cappuccino? I guess I did actually. Yeah. A cappuccino is a type of coffee. It has milk to it. Yeah. So cappuccino is the coffee that we drink at weddings. Okay, that's cappuccino, guys. Okay. So yeah. Shabnam, it's very noisy from your side. Did I you can hear a lot of noise, Shabnam. Okay, sir. Yes, Apurva? did you ever wear a dhoti kurta? Okay, yeah, good. So आप लोग समझ गए कि अब क्या था सवाल? थोड़ा सा टाइम लगा, but you guys open up, okay, your imagination. कि ये है आपके American way of asking this question. Americans ऐसे पूछते हैं क्योंकि these guys are from New York, remember? Okay, both these, the grandfather and the grandson are from New York. They are American. निशात, कहकशा, महफूज, उज़मा, आपसे मेरी उम्मीद थी, सुलेखा, शाजिया, अब सबसे उम्मीद थी कि आप एक सवाल पूछ लोगे जल्दी से, क्योंकि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गई थी ना. आप पूछ सकते थे, उठपटांग बातें पूछ सकते थे. क्या ये कभी पैसा खोया आपका? कैसे पूछेंगे? Did you ever lost money? कॉन्फिडेंस बोल Did you देना. ever lost your money? भाई साहब, Did you ever lost? lost is V2. did you ever lose your money? Yeah. Lost is V2 of lose. Remember everyone? Lost is the V2 of lose. तो क्या पूछना चाहिए था? Did you ever Did you ever lose your money? Lose your money. Lose your money. Okay. All right. So, दोस्तों, this is American way of asking this question. British way is different.
इसको ब्रिटिश तरीके से दूसरे तरीके से पूछते हैं, अभी बाद में बताएंगे, टेंशन मत लो, अभी जब Sir, तक can नहीं I आता। ask you some silly question? Of course you can ask. It's another thing that I will not answer. Did you meet ever your ex husband? हाँ, ये did you ever meet? फनी क्वेश्चन में क्या हो गया ना, गड़बड़ हो गया स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, क्या होना चाहिए था? रिपीट आतिफ, मैं did you Did ever you meet ever meet your ex-girlfriend husband? girlfriend's husband? Right, what a question. Ex-girlfriend's husbands, no, I never did. Okay, I mean, Sir, I may I met ask a some. question? Yes, of course, you're no need to ask a question that I ask a question, just ask. Did you ever made a new video about new vocabulary? Okay, ये सेंटेंस का अच्छा नहीं है शबनम, आप हिंदी में इसको महसूस नहीं कर पाए इतने सेंटेंसेस के बाद, और ऐसा क्यों हुआ है इसको सोचना जरूरी है, एनालाइज करने की सबकी क्षमता अलग अलग है। आपने क्या पूछा शबनम? सर, क्या आपने कोई नई वोकेबलरी का कोई नया वीडियो बनाया है? जबकि हम लोग जो पूछ रहे हैं वो आप ऐसा सवाल नहीं वोकेबलरी था। पे वीडियो कभी कभी डालते हैं ना सर यूट्यूब पे? मैं सब समझ गया, हिंदी भी समझ गया, इंग्लिश भी समझ गया। अब आप पहला जो मैंने पूछा सिखाया था उसका मतलब क्या था दोस्तों? डिड यू एवर गो टू अ पॉप कॉन्सर्ट की हिंदी शबनम करेंगे? सर, आई ज्वाइन नाउ Okay. Okay. Everybody, did you ever go to a pop concert? किसी ने मुझसे पूछा did you ever play hockey? अदीब asked me, did you ever play hockey? क्या हुआ इसका मतलब दोस्तों? ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का सेंटेंस, इसको ग्रामर में मत यूज करना, ओके दोस्तों, बिकॉज ग्रामर में ये रॉन्ग कहलाएगा, याद रखना, मैं बता रहा हूँ, ये अमेरिकन इंग्लिश है, ओके? इसके ब्रिटिश इंग्लिश इसके बराबर में जो होगा वो ऐसा होगा, डिड यू एवर प्ले हॉकी? ये सवाल है ना, अगर करेक्ट करना है ग्रामर में तो इसको बोलना होगा हैव यू एवर प्लेड हॉकी। क्या बोलना पड़ेगा बच्चों? Have you Have ever you ever played hockey? ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ओके? और अमेरिकन इंग्लिश क्या है? did you ever Did you ever play hockey? Ever play आप इसकी हिंदी कर लीजिए, हिंदी कर लीजिए। आप कभी हॉकी खेले हैं? आप कभी हॉकी खेले हैं? राइट, यही पूछने का हो। अमेरिकन स्टाइल में आप ऐसे पूछ सकते हैं, डिड यू एवर प्ले हॉकी? ऑलराइट, बोलचाल में चल जाएगा, लेकिन ग्रामर में करेक्ट क्या होगा दोस्तों? Have you ever Have you played ever played hockey? Played hockey. अब शबनम मुझसे दूसरा सवाल पूछ ले ताकि मुझे पता चल जाए कि वो समझ गई। अनीस, सुलेखा, शाजिया। Sir, did you ever play cricket? कहकशा ने भी अपना पिन छुड़ा लिया कि सर मैंने भी पूछ लिया एक सवाल, लो हो गया, Sir, ठीक है कहकशा। did you ever dance in Nagin style in your friends? Well, Barat. my face is like a Nevla. I can't do Nagin dance. I can do Nevla dance, you know. Nagin dance. No, I never did that. Okay. Did you ever say I love you to your ex? To my ex? After breaking up. After breaking up, did I ever say I love you to her? Well, no, I don't think so. No, I don't have those feelings anymore for them. Okay. My feelings have changed for them. You know, I consider them good friends. I don't feel attracted to them anymore. Okay. Okay, everybody, इसमें ever word का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, है ना? कभी भी, है ना? Did you ever? चलिए, did you ever go to a pop concert? Did you ever go to a pop concert? To the response. Shabnam, there are children around you speaking all the time. We can hear. Did I ever go to a pop concert? Did I ever go to a pop concert? The grandfather repeated the question, huh? He repeated the question. Did I ever go to a pop concert? Sometimes some people do that. No, some people repeat the question. Do you know someone who repeats the question you ask them? You know anybody like that?
Some people have this habit. Some people repeat the questions all the time. When you ask them, they will repeat. And some people repeat the question when they find the question very interesting, special. Then they repeat the question. Okay. Did I ever go to a pop concert? Oh, yes. I went to the pop concert. I went to the pop concert. उसने एक वर्ड बदल दिया ना, एक की जगह दी कर दिया. I went to the pop concert. अब इसका क्या मतलब दोस्तों? I went to the pop concert. What does it mean? What does it mean? I'll tell you. The grandfather wants to say, अच्छा बेटा, when you ask someone, did you ever go to a pop concert? आपका कहने का मतलब कभी भी कोई pop concert में गए है ना? कोई भी, कभी भी कोई भी pop concert में? उसने कहा कोई पॉप कॉन्सर्ट नहीं, एक खास पॉप कॉन्सर्ट में गए थे, द बेस्ट पॉप कॉन्सर्ट में गए थे. जब एक जगह ऐसे दी बोला जाता है स्ट्रेस करके, मैं बता रहा हूं, उसने पूछा था, अच्छा मेरे से पूछो, डिड यू एवर टॉक टू ए रशियन गर्ल? ठीक है, डिड यू एवर टॉक टू ए रशियन गर्ल? ओके, बात समझ में आ गई? तो मैं बोलूं यस आई टॉक टू अ रशियन गर्ल, ऐसा ही जवाब हो सकता है, या नो आई डिडंट टॉक टू अ रशियन गर्ल, यही रहेगा ना. अगर मैं चाहूं एक जगह मैं बोलूं मैं तो कई लड़कियों से बात किया रशियन, मैं कहूंगा आई टॉक टू लॉट्स ऑफ रशियन गर्ल्स, आई टॉक टू लॉट्स ऑफ रशियन गर्ल्स. लेकिन ये जवाब कैसा है? आई टॉक टू दी रशियन गर्ल. इसका क्या मतलब हो गया एक जगह ऐसे दी बोलने का? तो जरा समझिएगा, दादाजी कहना चाह रहे हैं, दादाजी वांट्स टू से कि कोई ऐसा वैसा नहीं, खास है ना. उसने कहा आई वेंट टू दी पॉप कॉन्सर्ट, मतलब कोई ऐसा वैसा कॉन्सर्ट नहीं, कोई एक स्पेशल कॉन्सर्ट गए थे, है ना. द क्वेश्चन वाज डिड यू एवर गो टू अ पॉप कॉन्सर्ट? आई वेंट टू दी पॉप कॉन्सर्ट. आई बात समझ में क्या था मतलब? अच्छा चलिए देखते हैं एक अनदर एग्जांपल. ओके, somebody asked you, आपसे किसी ने पूछा, did you ever watch a cricket match at the stadium? Did you ever watch a cricket match at the stadium? Everybody understands this question? Yeah. Did you ever watch a cricket match at the stadium? अब जवाब सुनिएगा. ज्यादातर लोग कहेंगे yeah, I watched a cricket match. No, I didn't watch a cricket match. लेकिन कोई आदमी अगर ऐसा बोला तो उसके मन में क्या था, क्या बोलना चाहता है वो? अगर उसने ऐसा बोला I watched the cricket match at the stadium, उसके मन में क्या चल रहा है? It means a particular match. हाँ, और it's very interesting, और वो स्पेशल है, राइट? इंटरेस्टिंग रहा होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंडियन हो तो वो 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल क्या मैच रहा होगा जिसने देखा होगा, धोनी हिटिंग दैट सिक्स अगेंस्ट श्रीलंका and India winning the World Cup. Yeah. If you are an Indian, think about the match that India played against England, West Indies in 1983 World Cup final. Think of that. ठीक है, अगर किसने वैसा मैच देखा हो और वो बोलना चाह रहा हो कि अरे हम तो जो मैच देखे, क्या मैच देखे, ऐसा वाला टोन रखे बिहार हिंदी में, तो वो क्या बोलेगा? आई वॉच्ड द क्रिकेट मैच एट द स्टेडियम, राइट? गॉट इट गाइस? ओके, तो दी बोलने का मतलब हो जाता है, ए मतलब हो जाता है कोई भी एक, राइट? ए मतलब कोई भी एक. जब मैंने कहा गिव मी अ पेन, तो कोई भी एक कलम दे दो मुझे, गिव मी अ पेन, कोई भी कलम, एक कलम, कोई भी डजंट मैटर. लेकिन दी पेन, अगर ऐसा कभी, मैं अभी बताऊंगा कैसे बोल सकते हैं, सिचुएशन दूंगा, अगर ऐसा बोला जाए जोर डाल के, खाली दी पेन नहीं, दी पेन, तरीका देखो, रिपीट करो एवरीबॉडी. दी पेन. ओके, दी क्रिकेट मैच. दी क्रिकेट मैच. आप सुनाओ. एंड ए स्पोकन इंग्लिश क्लास समझ में आता है? ए स्पोकन इंग्लिश क्लास, आप बोलो दी स्पोकन इंग्लिश क्लास. गलत बोल गई आरती बेटा, गलत बोल गई आरती गलत बोल गई. दी स्पोकन इंग्लिश क्लास, जोर डालते हुए, दी स्पोकन इंग्लिश क्लास. दी स्पोकन इंग्लिश क्लास. ए टीचर, दी टीचर.
The Hey teacher. 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 अच्छा, ये कब बोलेंगे, कब जरूरत पड़ेगी, सुन लो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लो, नहीं तो गलत बोल जाओगे. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. किसने आपको दी कॉम्प्लीमेंट कि अरे यार तुम्हारी इंग्लिश तो काफी अच्छी लग रही है, स्पोकन इंग्लिश क्लास जा रहे हो क्या? आर यू गोइंग टू ए स्पोकन इंग्लिश क्लास? आर यू गोइंग टू ए स्पोकन इंग्लिश क्लास? इजी है ना? योर Yes. इंग्लिश इज सो गुड नाउ. आर यू गोइंग टू स्पोकन इंग्लिश क्लास? योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर. आर यू गोइंग टू ए स्पोकन इंग्लिश क्लास? सीधी सिंपल है, कोई टेंशन नहीं. Yes, sir. बोलने वाले के मन में चल रहा ना, स्पोकन इंग्लिश क्लास, ऐसा स्पोकन इंग्लिश क्लास जा रहे ना, मस्त क्लास जा रहे भाई, उसके मन में ये चल रहा है. ठीक है, वो कैसे बोल सकता है इस बात को? आई एम गोइंग टू दी स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश क्लास. क्लास. उसके अब ये बोलने वाले से क्या पता चलता है कि वो जहां जा रहा है उस जगह के बारे में उसकी क्या राय है? बहुत अच्छा. सबसे बेस्ट है. It's very हाँ interesting जी, or एग्जैक्टली. बोलने वाले के मन में ये राय चल रही है, आई एम गोइंग टू दी स्पोकन इंग्लिश क्लास. तो आप तो हो जाओगे थोड़े से कंफ्यूज. अच्छा, व्हाट डू यू मीन, कहाँ जा रहे हो भाई, ऐसा क्या हो गया, राइट? आप क्या बोलोगे? ओ रियली, वेयर? ओके, तो बोलेगा आई एम गोइंग टू STC, सोनी STC. ट्यूटोरियल Yes. क्लासेस. ये ओके, तो बात समझ में आ गई. ऐसे करके आप किसी पर्टिकुलर के बारे में आप कॉन्टेक्स्ट देख लो ना. ग्रैंडसन ने पूछा, ग्रैंडफादर डिड यू एवर गो टू अ पॉप कॉन्सर्ट? उसने कहा, डिड आई एवर गो टू अ पॉप कॉन्सर्ट? आई वेंट टू दी पॉप कॉन्सर्ट. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. Yeah. yeah. Yes, sir. Yes. What do you mean? What do you mean? The grandson says, what do you mean? क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहे हो? What do you mean? I, Terry, your grandfather, was at the Beatles concert in August 1965 at I, Terry, your grandfather. ये ड्रामा क्रिएट कर रहा है ताकि बात को बढ़ा के दिखा सके. कभी कभी ऐसा बोलते हैं हम लोग, बात को तंगड़ करते हैं, थोड़ा लंबा खींचते हैं. I, Terry, your grandfather was at the Beatles concert Shea Stadium, New York City. in 1965 at Shea Stadium, New York City. So that was a good one, was it? जब वो बताया तब ये ग्रैंडसन पूछा, अच्छा था मतलब बढ़िया था ना. जैसे आप किसी ने आपसे पूछा, योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, आर यू गोइंग टू अ क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश? आई एम गोइंग टू दी क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश. और उसके बाद आप अगले लाइन में आप चाहे तो बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू STC. तो सामने वाला पूछेगा, ओ सो इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट. सो ओ हाँ, तो बढ़िया है ना, इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट, इज इट? इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट, इज इट? है ना? ऐसे करके कैसे बोलेगा बेटा? ओह सो इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट, इज इट? बोलो. Oh, it's a good institute. Good. Is it? Is it? Yes, Moni. Well done, Apurva. Oh, so it's a good institute, is it? अब आपका क्या रिएक्शन आएगा? Oh, it is the best institute ever. क्या आप क्या बोल देंगे? It's the best Yes. institute Best ever. institute ever. It is the आपके best मन में चल रहा है बहुत institute स्पेशल है, आप तो बोल ever. रहे हैं इससे बढ़िया इंस्टीट्यूट नहीं होगा. तब इट्स द बेस्ट इंस्टीट्यूट एवर. Ever. जरा बोलना बेटा. Oh, Yeah. it's the best institute ever. इट्स द बेस्ट इंस्टीट्यूट एवर. अच्छा, बहुत सारी चीजें सीख गए आप इस बातचीत में, गौर करिए. चलिए, मैं हूं आपका वो दोस्त जो आपसे पूछ रहा है और आप अपना जवाब दीजिएगा सारे लोग. ओके, हे योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, आर यू गोइंग टू एन इंस्टीट्यूट? Yeah, Yeah, I am going to the to the I'm going Yeah, I'm going I to am going to the the STC English Institute. गड़बड़ हो गया, सारा खा पका गया. ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आते हैं. मैंने ए बोला था, आपको दी बोलना था ताकि आप एहसास कराएं कि कुछ स्पेशल आप बोल रहे हैं. ए मतलब जस्ट अनदर, कोई भी एक, लेकिन आप स्पेशल बनाना चाहते हैं. तो आपका रिएक्शन होगा, आई एम गोइंग टू दी इंस्टीट्यूट. और टोन भी ऐसा ही रहना चाहिए. कैसे बोले? आई एम गोइंग टू दी इंस्टीट्यूट, ऐसे बोल देंगे? ऐसे बोल सकते हैं क्या? No, आई एम गोइंग टू going to the institute. the ST. अरे भैया पूर्वा, इंस्टीट्यूट था, STC कहाँ था?
तो आप बोलना चाह रहे हैं, I'm not going to, yes, I'm going to an institute. एक सीधा सा जवाब है ना, yes, I'm going to an institute. लेकिन an institute बोलने से हो जाता है वो just another. लेकिन आपको तो स्पेशल बताना है, आपके मन में तो चल रहा है, अरे यार हम तो जो इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वो तो बस इंस्टीट्यूट है, ऐसा होता है क्या? ऐसा चल रहा है आपके मन में, तो I am going to. I am going to an the institute. I am going to the institute, right? The spoken English class, जो भी वर्ड यूज करा है वही सेम वर्ड, और उसके बाद अगले लाइन में आप डिटेल्स दे सकते हैं. I am going to STC. I am going to STC Institute. STC. अगर ऐसे चले कोई और भी मैं और एग्जांपल दिलवाऊंगा, ये वाला क्लियर हो जाए फिर और करवाऊंगा. ओके, I am going to STC. Oh, is it a good school? It's a good institute, is it? Yes, it Yes, is. Yes, it is. the best, It's a good. institute. It's the best. It is the Yes, good it is the best. best institute ever. हाँ, अब समझ में आया, पूरी बातचीत, माहौल, मूड समझ में आया एक दूसरे की तरफ. ये इंपॉर्टेंट है, फ्लो समझना, फ्लो. बहुत अच्छा क्या पूर्वा, फाइनली. चलो दूसरा ले लेते हैं. ओके, I want to learn English. Can you tell me a teacher? Can you recommend a teacher? I want to learn English. Can you recommend a teacher? किसने पूछा? I recommend the teacher. Not the नहीं है वो, recommend the Moni. Come on everybody, it is not the, it is the. क्या याद नहीं है? I recommended the I teacher. will recommend the teacher. I will recommend the teacher. Who? He is Abhinay Shankar. He is only one, the Binay sir. The Binay Is Shankar he's Soni. good? He's a good teacher, is he? He's a good teacher, is he? Ever. Yes, Yes, he is. he is. He is a good teacher ever. He is He's the the best best teacher ever. Best ever. He He's is the the teacher best ever. teacher Best ever. Ever. teacher. Okay. अरे उससे बढ़िया आपको मिलेगा ऐसा वाला एटीट्यूड, ठीक है ना? He's the best teacher ever. I hope you understand the whole conversation now. Yeah. Can we do it one more time? Yes, sir. Yes. Okay. Guys, I want to learn English. Can you recommend a good teacher? Yes. course. I recommended you. Yes, I Recommended The recommended teacher. the teacher. The teacher. The teacher Teacher. for English. I will I recommend you will- the teacher for English, right? मतलब समझ गया ना, Yeah. एकदम one of those, एकदम जैसा वैसा हो नहीं सकता ऐसा वाला एटीट्यूड रखते हुए, excellent type है ना? Oh, really? Who is he? He is Vinay. He He is a Vinay He's Shankar he's Soni. called Vinay Shankar Soni. आप ऐसे बोल सकते हैं. He's called. Called Vinay Shankar He Soni. is called Vinay Shankar He is called Soni. Vinay Shankar Soni. Oh, okay. So he's a good teacher, is he? Yes, Yeah. he's the best He teacher ever. Yes, he The is. best He teacher. is the best teacher ever. teacher अब ever. रोल बदल देते हैं. अब आप मेरे को मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना, ओके? चलो आप आप ये करोगे, पूछोगे, मैं बताऊंगा. रोल रिवर्सल, ओके? नहीं, वही सेम कॉन्वर्सेशन. I want to Learn. join a spoken class. Do you recommended any class? वो क्या क्या कर देती है पूर्वा, कुछ भी बोल देती है एकदम हड़बड़ा करके. डू यू रिकमेंडेड? क्या था ये पूर्वा? Do you नहीं ऐसा recommend? चलेगा, नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा. जितनी देर लगे स्लो हो जाओ, स्पीड कट करो, ठीक है? एकदम गलत बोल जाती है. डू यू रिकमेंडेड कभी सुना? Class. Did you? Will you please recommend विल me? यू रिकमेंड बोलना Will था, you recommend? करें, ठीक है? आप डू यू रिकमेंड भी बोल सकते हैं पूर्वा, लेकिन डू यू रिकमेंडेड नहीं बोल सकते. डी कहाँ लगाते हैं पूर्वा? कभी लगाते हैं डू यू के बाद डी V2? कभी ऐसा सुना? तो फिर मुंह से नहीं निकलने देना है, रोकना है, और उस रोकने के लिए स्लो होना जरूरी है बेटा, ठीक है? Yes. नहीं तो Yes, आपका इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा ना वहां पे इंग्लिश में फटाक से. सब कुछ जानते हुए भी प्लीज स्लो डाउन, ओके? डू यू रिकमेंड अ टीचर? आपका लाइन. चलो गाइस फिर से, या गो अहेड. I want to learn English want language. to Do you learn. know any I teacher? want to join class for English. Will you recommend me? Me नहीं. Do you recommend a teacher? Do you recommend a teacher?
Do you know a good teacher? Do you know a good teacher? Do you know a good teacher? Good teacher. जरा सुनना जैसे मैं जवाब देता हूँ. ओके, मैं थोड़ा सा वेरिएशन लाऊंगा. ठीक है, मैं थोड़ा वेरिएशन लाऊंगा. विनय शंकर सोनी, ही इज द टीचर फॉर इंग्लिश. सुना? Yeah. देखा, मैंने वेरिएशन कर दिया. मैंने वो लाइन से जवाब नहीं दिया जैसे आपको सिखाया था. मैंने थोड़ा चेंज किया, लेकिन मैटर वही रहा दोस्तों. आपने मुझसे कहा, सर कैन यू टेल मी अ गुड टीचर? विनय शंकर सोनी, ही इज द टीचर फॉर इंग्लिश. क्या समझे? फॉर्मेशन एक साथ. एक लाइन में कंप्लीट. समझ में आ गया ना? ही इज द टीचर फॉर यू. अब आप बोलो, oh, so he's a good teacher, is he? Oh, so he's a good teacher. He is a good teacher, is he? He's the best. He's the best ever. He's the best teacher ever. बात समझ में आ रही है? बातचीत समझ में आई? बाकी रिकॉर्डिंग में भी आएगा ये. आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना अकेले, जिसको जितनी समय टाइम लगे दोबारा तिबारा देख करके कर सकते हैं ना. And I'm sorry I didn't send you the recording yesterday. I'll send today, okay? Both the recordings, yesterday's and today's, both. Shall we continue? Yeah. Did this part is over now? Yeah. Okay, I'll just help you with the last sentence a little more. You know, once I went to Kolkata, my bua lived there, okay, and she cooked fish curry for me. Oh, that was the best fish curry ever. पूरी बातचीत समझ में आ रही ना? Once I went to Kolkata many years ago, about 17, 18 years ago, and my bua lived there, and she cooked fish curry for me. Oh, it was the best fish curry ever. एक बार हम कोलकाता गए थे, बस 17-18 साल पहले की बात है. मेरी बुआ रहती थी, वो फिश करी बनाई. ओह, क्या फिश करी बनाई थी यार. उससे अच्छा फिश करी आज तक नहीं खाया. यही बोला ना मैंने? हाँ, बिल्कुल यही बातचीत हुई. ओह, वंस आई वेंट टू कोलकाता, माय बुआ लिव्ड देयर. इट वाज अबाउट 17-18 years ago. शी कुक्ड फिश करी फॉर मी. ओह, इट वाज द बेस्ट फिश करी एवर. सपोज यू इनवाइट मी टू योर हाउस और आपने मुझे खाने के लिए कुछ दिया. चलो, खीर रखा है सामने मेरे, ओके, और मैंने खीर चम्मच मुंह में डाली और कहा, ओह माय गुडनेस, दिस इज द बेस्ट खीर एवर. मुंह में डालते के साथ मैंने क्या कहा? दिस इज द बेस्ट खीर एवर. बुमराह इज द बेस्ट इंडियन बॉलर एवर. बुमराह इज द बेस्ट इंडियन बॉलर एवर. अच्छा दोस्तों, ये एवर लगाने से क्या हो गया, पता चला कुछ? उसके जैसा कोई नहीं. अगर मैं एवर हटा दूं, बुमराह इज द बेस्ट इंडियन बॉलर, ठीक है, अभी भी बेस्ट इंडियन बॉलर, तो फिर एवर लगाने से क्या हुआ दोस्तों? सोचा आपने? स्पेशल फील मतलब हो रहा है जैसा कोई अभी तक वो नहीं आया है. ओ है अभी well तक. done Moni, well done my dear. Apurva, your answer was not right, because अगर आप वो बोलना चाहते तो वो तो बोल ही रहे, he is the best bowler, मतलब हो ही गया, उसके ऐसा कोई नहीं, he is the best bowler. लेकिन ever मतलब क्या था? तो भाई सही बोला मोनी और आतिफ लोगों ने कि इसका मतलब कि अभी तक उससे बढ़िया, मतलब आज तक नहीं हुआ. he is the best bowler ever. ठीक है, got it guys? एवर का मतलब समझे? ऐसे ही करके अगर कोई वर्ड आए ना तो अंदाजा लगाना पड़ता है कि क्या हो सकता है वहां पे. इज द बेस्ट बॉलर एवर. That was the best concert ever. That was the best concert ever. Okay. Tell me about it. Okay. Tell me about it. ठीक है, बताइए थोड़ा. हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे ऋषिकेश, your mic is noisy. Why don't you guys realize it when you have people around you? ऋषिकेश, तुम्हारे आसपास लोग हैं कि नहीं है? है ना? अनम्यूट करो, पहले बात करो. समझाता हूँ कैसे ऑनलाइन क्लास में ध्यान रखते इस बात का. ऋषिकेश, अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट यार, अनम्यूट. भाई, तुम्हारे आसपास लोग हैं ऋषिकेश? यस सर. तो तुमको क्या लगा कि वो आवाज नहीं आएगी जो बातें कर रहे हैं वो लोग? कुछ बोल रहे हैं वो लोग जो तुम्हारे आसपास है, छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ना. तो इस बात Yes, को sir. समझो, जहां तुम हो वहां
प्योर कंप्लीट साइलेंस होनी चाहिए ऑनलाइन क्लास के लिए, बिकॉज योर माइक विल कैच द नॉइज वेर यू आर. अब 20 लोग के 20 रूम से आवाजें आने लगे तो क्या होगा दोस्तों? थिंक अबाउट इट. So common sense, Rishikesh, okay? Don't unmute yourself when there are people around you talking. If there are people sleeping, no problems. If there are people sitting, not talking, no problems. But if there are people talking, you do not unmute yourself. Okay, everyone. एक्चुअली होता क्या है, व्हाट हैपेंस कि आपको पता नहीं चलता कि वो नॉइज है, ठीक है, क्योंकि आप तो बगल से सुन रहे होते ना, लेकिन माइक पे वो नॉइज लगता है. एम आई राइट गाइस? Yes, sir. Well, टेल मी अबाउट इट. हिंदी में क्या बोलते हैं तो बताइए थोड़ा. टेल मी अबाउट इट. ओके ओके, टेल मी अबाउट इट. देखो दोस्तों, हिंदी में मी नहीं बोलना जरूरी होता है. नाम बताओ ना अपना. आरती, अपने हस्बैंड का नाम बताओ ना. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Tell me about your आरती, अपने husband हस्बैंड का name. नाम बताओ ना. Tell me your husband's name. टेल मी योर हस्बैंड्स नेम. क्यों भाई? क्योंकि इंग्लिश में टेल बोले जैसे ही, तो हर हाल में, चाहे आप हिंदी में बोल रहे चाहे नहीं, 99% चांस है कि आपको मी, अस, हिम कुछ बोलना पड़ेगा. सारे लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप फिर ये गलती करने वाले हो. और जाके प्रैक्टिस कर लेना. यार बताओ ना क्या हुआ. इंग्लिश. Tell me what Tell happened. me, tell me what happened. Tell me what राइट. happened. थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताओ. Tell me about your Tell me Tell me family. about your your family. अगर 4-5 लोग मिलकर सुनना चाह रहे हैं तो क्या बोलेंगे? Tell us about your family. टेल अस अबाउट योर फैमिली. Tell us तो about your टेल Yeah. के बारे में एक रूल बना आपके दिमाग में कि टेल के बाद हर हाल में समबॉडी चाहिए. Yeah. Yes, sir. राइट. देख, अब तू अपना प्रॉब्लम मत बताना शुरू कर. डोंट स्टार्ट टेलिंग मी योर Your प्रॉब्लम. problem. Your No problem. problem. डोंट स्टार्ट टेलिंग मी योर प्रॉब्लम. अपने आप मी आ जाएगा, आदत पड़ जाती है, ठीक है, सुनते सुनते. मी, अस, ओके. और बाकी जगह पे तो कुछ रहेगा ही, ठीक है. देखो, तुम उसको बताना मत, उसको बताना मत. क्या इंग्लिश में? Don't tell him. Don't tell him. Don't Tell tell him. her. Don't tell him. Don't tell him. उसको बताना मत कि हम उसका मर्डर करने वाले, ओके. Don't tell Don't him. tell her I will die her. Don't. Don't I tell will him kill that her. I'm going to kill I him. will kill her. Yeah. Okay, next. You know, I never tell the mosquito that I'm going to kill it. I never tell the mosquito. Some people just tell him, they give the warning, but I don't. I just go and kill it, no warnings. Yeah. They are real enemies. That's why. कभी have you ever wondered कि mosquitoes ना होते तो क्या होता? Have you ever thought about it? Why are mosquitoes necessary? Mosquitoes क्यों जरूरी हैं? People say that mosquitoes are not necessary in the ecosystem. वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Mosquitoes are totally unnecessary. ऐसे कहते हैं ना कि इकोसिस्टम में हर चीज का होना जरूरी है, ये चीज हट जाएगा तो वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा. But mosquitoes don't play a role in our ecosystem. Let me Google it, okay? Why are mosquitoes necessary in our ecosystem? Okay. They are actually. Let me ask another question, guys. Can mosquitoes be done away with? What? Yeah. Yes. Yeah, we can get rid of them without harming our ecosystem. Now, let me ask another direct question. Will our ecosystem be impacted if we get rid of mosquitoes altogether? Oh, okay. Yeah. Okay. Okay. You know what they are doing, scientists, with mosquitoes? Do you know? Have you read about it?
they are trying to remove their ability to, what is that thing? Infect, us. They are creating, they're doing something, some research on it, that in the future, mosquitoes will not be able to, spread, infect us, spread diseases. They're working on it, like malaria, dengue, and so many other diseases. They Yeah, spread. yeah, I watched it. I have You watched it. watched a video, Deep, about it? Yeah. Yeah. How interesting this is, that mosquitoes will not be able to do what they have been designed to do. उनको जिस चीज का डिजाइन किया गया करने के लिए, उनको वो काम करने से रोक दिया जाएगा. बड़ा मजा आएगा. Okay, let's continue. It was There isn't any mosquitoes in France. Mosquitoes don't exist in France, isn't it? Sorry, Moni, I muted you. Okay. Mosquitoes don't exist in France. Yeah. Okay. There aren't any mosquitoes in France. There aren't any mosquitoes in France. was kind of exciting and frightening, too. Tell me about it. Tell me about it. Then he said, it was kind of exciting and frightening too. It was kind of exciting and frightening too. Exciting तो समझ में आता है, लेकिन frightening भी बोला उसने. It was kind of exciting and frightening. Kinda means a little, okay? Kinda means a little. Kinda. It was a little exciting and frightening too. It was kinda exciting and frightening too. हिंदी में एक फ्रेज है, बोलते हैं ना, वो थोड़ी पागल टाइप की है. टाइप की है बोलने से क्या मतलब था? सीधा पागल क्यों नहीं बोले? वो पागल है? पूरा पागल नहीं है इसलिए. थोड़ी सी पागल है, थोड़ी सी है. नहीं, सच बोलो. जब आप कहते हो वो थोड़ी पागल टाइप की है, तो आप क्या बोलना चाहते हो? वो पागल नहीं है, मगर पागल तो हरकत करती है. करती है कभी कभी ऐसा. हाँ, मतलब लिटरली पागल नहीं है, राइट? हाँ, तो ये टाइप की जो हम लोग बोलते हैं ना, वहां पर हम लोग काइंडा बोल सकते हैं. शी इज काइंडा क्रेजी. शी इज काइंडा क्रेजी. थोड़ी क्यूट टाइप की है वो. कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? काइंडा क्यूट. शी इज काइंडा क्यूट. It's kind of cute. Yeah. She is kind of pretty. हाँ. सर थोड़े फनी टाइप के हैं, मतलब बीच बीच में मजाक करते रहते हैं. कैसे बोलेंगे? सर इज काइंडा फनी. आप काइंडा के बाद कौन सा वर्ड यूज करें? जरा देख सोच के बताओ तो. काइंडा के बाद कौन सा वर्ड यूज करें? किस टाइप का वर्ड? सर इज काइंड ऑफ फनी. काइंडा के बाद किस टाइप का वर्ड यूज करें आप लोग? वर्क करके बताओ. Adjective. Well done. Funny, cute, crazy, these are all adjectives. तो अभी एक यूज, बात और यूजेस हैं, लेकिन सारे एक साथ नहीं. ठीक है, एक बार में एक. तो आप यूज कर सकते हैं. शी इज काइंड ऑफ ब्यूटीफुल. किस दोस्त ने फोटो दिखाई गर्लफ्रेंड की? हाँ, शी इज काइंड ऑफ ब्यूटीफुल. सुंदर है. ठीक है, तो थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर देते हैं, राइट? शी इज काइंड ऑफ ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया, मतलब उतना स्ट्रांग ब्यूटीफुल नहीं बोल रहे हैं. होता है शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये वाला नहीं बोल रहे हैं. शी इज काइंड ऑफ ब्यूटीफुल. सुंदर लग रही है, वैसे वाला टोन, राइट? तो दोस्तों आप समझ रहे हैं, काइंडा लगाने से वो वर्ड क्या हो जाता है? थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, राइट? पूरा एकदम अपना पूरा स्ट्रांग मीनिंग नहीं रखता. The class is kind of noisy. था मुंह बना के बोल रहे हैं. The class is kind of noisy. थोड़ा हल्ला हो रहा है क्लास में, ऐसे करके, है ना? तो जो सॉफ्ट करते हैं ना टोन को, तो काइंडा लगा देते हैं. मतलब एकदम फुल फ्लेज नहीं बोल रहे, एकदम सीधा सीधा नहीं बोल रहे, हल्का सा सॉफ्ट कर देते हैं. किसी के घर गए, खाना मिला, ओके, थोड़ा मिर्च ज्यादा है, तो आप क्या बोलते हैं? तीखा कर दिया, ऐसे बोलते हैं आप. थोड़ा तीखा हो गया है, कैसे बोलेंगे? Food is It's kind of hot. spicy. It's kind of spicy, right? Spicy. Yeah. तो आप समझ रहे हो दोस्तों, काइंडा कहाँ बोलना है? या देखो महफूज को देखो. फिर सो मल्टीटास्किंग कर रहा है. फिर कोई आ गया रूम में. दरवाजा उसने बंद किया नहीं. कल क्या बोला था महफूज कि दरवाजा बंद कर देंगे, राइट? यस सर, दरवाजा बंद है सर. वो हम अपने ही में बोल रहे थे, इट्स काइंड स्पाइसी. अरे झूठा, तू स्माइल करके सामने वाले से बोल रहा था. नहीं सर, खुद में ही बात कर रहे थे हम. अरे भाई, आयशा आर यू हियर? नहीं. आयशा, Yes.
देखो Yes, बेटा, sir. पापा को बैड न्यूज दे दो, बोलो भैया पगला गया, खुद से बातें करता है, बोल रहा था हम खुद से बातें कर रहे थे, अब देखो क्या होगा। ठीक है, दिस इज नॉट ओके। आयशा, ही इज यंगर देन यू और ओल्डर देन यू? ही इज यंगर देन यू, आई थिंक। Yes, sir. You are number 2, right? 6th. Huh? Sorry? Oh, okay. Okay. I thought I only knew your elder brother. What's his name? Who's not attending the class these days? What's his name? Nazir. Nazir. Yeah, I thought Nazir was the first and you were the second. Nazir is number 5, you're number 6, right? No, Nazir is 4, Mahfouz is 5. And I'm Nazir 6. is 4 and who is number 5? Mahfouz. Mahfouz. So Mahfouz is older than you. Mahfouz is older than you. Aisha, you are younger than Mahfouz. Oh, bhaiya. Sahi Yes. hai. He is bhaiya. Okay. All right. No. Mahfouz, तू बड़ा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Be a role model हमारे यार. साथ Be a role model. क्या छोटी बहन सोचेगी कि भैया पढ़ाई में से कर रहा है, बदमाशी कर रहा है. Think about your image यार. Think about your respect. Come on. Okay. तो दोस्तों, आप ये ऑडियो फाइल और सुनिए और मजे करिए, इसमें बहुत कुछ मजे करने लायक है। आपने आज सीखा ना, काइंडा, फिर यू नो दी, राइट, एवर, डिड यू एवर, तो जरा प्रैक्टिस कर लीजिए जो मैंने एक्सप्लेन किया है, बिकॉज इट्स ऑल यूजफुल, बातचीत में बहुत काम आती हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो करना क्या है, आप सिर्फ ऑडियो फाइल बार बार सुनिए, things will be easy for you. And I'm glad that Aarti, you're going to be regular now, okay? And I'll see you all tomorrow. Bye, everybody. Bye, Bye, sir. Yes, sir. Bye-bye. Bye-bye. Bye.